Hi everyone, welcome to the video and channel. Today we have very special sporterized version AK Saiga 308, very famous in this part of the world here in Pakistan, in our country. अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को वीडियो में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं फेंडर आरम कंपनी पेशावर से एक न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो आज मैंने आपके लिए लाया है अनबॉक्सिंग के लिए 308 कलाशनकोव कंपनी की सेगा सेमी ऑटोमेटिक राइफल 308 7.6251। तो मेरे साथ अहमद हुसैन भी मौजूद है। वो हमारे जितने भी इंग्लिश ऑडियंस है वो इसकी स्पेसिफिकेशन और प्राइस वगैरह इंग्लिश में जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करेगा आगे वीडियो को जो है ना आपने स्किप नहीं करना है। इसके बाद जो है ना हम आप लोगों के साथ जितने भी इम्पोर्टेड के राइफ़ल होते हैं इस पर भी हम रिव्यू बनाएंगे वक्त के साथ साथ। तो आज जो हमने आपके लिए राइफ़ल लाया है ये आप देख लें, ये शॉर्ट वर्जन कलाशनकोव कंपनी की सेगा 308 या 7.6251 सेमी ऑटोमेटिक राइफ़ल है। ये आप देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त राइफ़ल है। ये शॉर्ट वर्जन में आया है, इसमें लॉन्ग राइफ़ल भी है 308 की। ये सेमी ऑटोमेटिक में इम्पोर्टेड में सबसे बेहतरीन राइफ़ल है। ये आप देख लें 308। इसका मज़ल ब्रेक जो है ना AK-74 जो है ना या कलाकोव 222 की तरह इसका ये मज़ल ब्रेक है। इसके अलावा इसका फोर्थ ग्रेप आप देख ले व्यूअर्स, यहाँ जो है ना नीचे इसमें रेल भी दी है टॉर्च या ग्रेप वगैरह लगाने के लिए। ये भी बेहतरीन ऑप्शन है जो ज़्यादातर और राइफ़लों में नहीं है। अहमद हुसैन आपको जो है ना इसका डिटैचेबल बॉक्स मैगज़ीन भी दिखाएगा। इसका 5 राउंड या 5 शॉट डिटैचेबल बॉक्स मैगज़ीन है, ये आप देख लें। इसके साथ एक एक्स्ट्रा मैगज़ीन आते हैं और एक क्लीनिंग किट मेरे ख्याल में साथ है। ये अभी इसकी रियर साइड पे आते हैं, ये आप देख लें 800 मीटर इसका मैक्सिमम रेंज है। और मिशन के लिए RPK की तरह जो है ना विंडेज के लिए स्पेशल ऑप्शन भी है इसमें मौजूद है। और इसके अलावा इसके बट स्टॉक पे आते हैं, ये आप देख लें हार्ड पॉलीमर का बाट है। और आपने इसको फोल्ड करना है तो लॉक जो है ना इसको आपने बंद करना है, यानी सेमी ऑटो से आपने निकालना है। और इसके बाद जो है ना ये आप देख लीजिए ये फोल्ड हो गया, ये और भी शॉर्ट हो गया। और ज़्यादा लोग जो है ना इसको सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। और इंपोर्ट में रशिया की बहुत सी राइफ़ल आई है, लेकिन ये सेगा की कलाशनकोव जो है ना या जितने भी राइफ़ल आते हैं 308 में बहुत ही मशहूर है। ये अहमद हुसैन आपको इसमें जो है ना इसकी इंग्लिश में स्पेसिफिकेशन वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। Hi everyone, welcome to the video and channel. Today we have very special sporterized version AK Saiga 308, very famous in this part of the world here in Pakistan, in our country. Kalashnikov group of company designed such particular rifle for sports and hunting and target shooting. It is an upgraded version of the AK, traditional AK. It has a Picatinny rail on the front as well as on the side. You can mount laser torch or any other accessories. It has also a side rail for the scope mounted. Very handy gun in 308 or 7.6251. Its 90 angle gas block makes it so comfortable while you are shooting on the target because it absorbs lots of recoil of the rifle because of the gas dispersion inside the gas chamber. One of the very fantabulous and modernized AK. It has an aggressive fire selector. It has only 2 modes, safe and fire. When it's safe, you cannot you can fold the rifle just like this. But when it is in the firing mode, you cannot fold the butt because it has an active mode. Viewers, it's a traditional AK. The rest is inside the system and the piston. It's a delay blowback system of the AK-47. Pistol grip is polymer, very light, very handy. It sits in the hand so well, you can shoot quite comfortably. So is the butt stock, just like AK-74, giving a lightning cut so that they can reduce the extra weight of the rifle. One of the very best option for the everyday carry in your car or in your for the safety in the home for the home defense in your in safety as well. Its market value vary with the fluctuation of the rifle and demand and supply. It can vary here in our local market from 4 lakh to 4 lakh and 50. It has a detachable box magazine which
contain 5 round, and you can purchase a version of the magazine aftermarket as well. Its availability is quite a lot here in our local market in Peshawar. Hope you guys enjoy the video. Keep sharing, keep subscribe, and please be support us. See you in next video. Thank you so much.